Hello everyone, very good morning to all of you. So guys, yesterday IBPS PO prelims result was out, okay, and many of our students they have cleared the prelims exam, and now they are preparing for mains, and only they have only 10 days left. On 30th of November, the IBPS PO mains is there. So again, today again I have already told you regarding that video in which I am going to tell you about the daily timetable for the next 10 days. So those who are already preparing for the exam, those who are going to appear for the next year, डू वॉच दैट वीडियो. आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है. ठीक है. यस इज राइट, 8 days लेफ्ट ओनली. सो देखना वो वीडियो, आप सभी को बहुत हेल्प मिलेगी. एंड आई वेल आई एम ट्राइंग टू create that video na, so that time I have an idea that those of you who are appearing for next year na, I am giving you a 90 days challenge. If you are able to stick to that timetable for the next 90 days na, first of all that would be very helpful for your preparation, and your preparation it will be having a jump start. Okay, so do that if you are able to, है ना. बहुत हेल्पफुल होने वाला है आप सभी के लिए. हाय हाय, गुड मॉर्निंग गाइस. वेरी गुड मॉर्निंग रिम्पी, रुपिंदर, रोहन. चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का करंट अफेयर. लेट्स स्टार्ट. So those who are new to the session, do join my Telegram channel. This is the QR code here. You can scan this QR code and join the Telegram channel. You will get all the important PDFs and everything here. Great. Good morning, Pratham. Good morning, Vasumati. Good morning, Dhirendra. Excellent. Chalo, let's start. First of all, let's quickly revise the yesterday's current affairs. So we know that PM Modi commences the 150th birth anniversary of Birsa Munda. So we know that he was born in 1875. He was a very important person to start this tribal rebellion against the Britishers. And because of his rebellion, the Chota Nagpur Tenancy Law Act was passed, which recognized the tribal ownership over their land. So it was a very important event. The second news was reconstitution of the Interstate Council. So in order to foster cooperative federalism, the Interstate Council, which is also given in the Constitution of India, it was reconstituted, and the Prime Minister is the chairperson of this Interstate Council. Alright, and it will include all the chief ministers and 9 union ministers. ठीक है. So in order to foster cooperative federalism, जो भी हर स्टेट की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं उसको बारीकी से समझना और एक कंबाइंड डिसीजन लेना, दिस इज द पर्पस ऑफ दिस इंटरस्टेट काउंसिल. ठीक है. Then we saw that a Niti Aayog symposium was there. There was a meeting regarding this green transition in the states, in which they have released one booklet which was focusing on the sustainable energy environment related issues, and this symposium took place in New Delhi. Okay. Next is India is ranked in top 10 after for patents, trademarks and industrial design. So these are what? These are intellectual property, okay, and there are different kinds of IPRs. In patents, in trademarks and industrial design, India ranks in top 10. But apart from this, there are also other IPRs, for example copyright, GI tags, like this. Okay, and this report has been published by World Intellectual Property Organization 2024 report. Okay. Next was the discovery of Times of India 6651B. It is not TOI, is not 6 Times of India. I am just helping you to memorize it. Okay. So this is a exoplanet, and it was found outside our solar system. Okay. And why we are calling it a planet? Because it is also revolving around the sun, and the name of that sun or the star is TOI 6651. B नहीं था उसमें. ठीक है. And the scientists of Physical Research Laboratory of Ahmedabad, they have found this new exoplanet. Clear? Just remember the TOI 6651. Whenever they can ask you in the exam, what is this TOI 6651? So it is a exoplanet. Next is Union Home Ministry approves first all-women battalion force in the CISF. So that is Central Industrial Security Force, and all the women, the entire women battalion was approved. So we know that in order to
promote women participation in the defense forces. This is a good sign. Clear? So which organization of the Central Armed Police Force it has been approved for CISF? Next one is the Indian overall exports for April to October 2024. So we have seen the export value is 468.27 billion. But overall we have seen that we have a trade deficit. Our imports are more than our exports. Okay? So remember this thing. Next we have RBI expand forex monitoring, right? So they have mandated spot deals reporting for improved transparency, and where they have to report it, Clearing House Corporation of India Limited. ठीक है, इसको रिपोर्ट करना है. Remember the spot deals, which is basically in cash and more liquid funds. Next was Elon Musk top Fortune 100 most powerful people in the business, and in this ranking Mukesh Ambani was ranked 12th. So आप ये याद रखना, Fortune 100 most powerful people, Elon Musk was at number 1. And now since Donald Trump has been elected as the president of United States, he is a very good friend of Mr. Donald Trump. So again his power has also increased. Okay? These were the important current affairs for the yesterday. Chalo. Now let's start today's current affairs. So we'll be starting with one defense related news. You can consider it under defense or international also. Okay. So India and Japan have signed an agreement to stealth unicorn mast for Navy warship. So what is this unicorn mast? Let's see. So it is nothing but unified complex radio antenna mast for Indian Navy warship. Okay, so what is the purpose of this unicorn mast? Basically these are the set of antennas which will help the ship, okay, which will help the ship to become more in the stealth mode, so that it does not come under the radar. So it would be very helpful for during the wartime like situation. So once this ship is not coming under radar, it means it is entirely invisible to the radar. So it will help us to gain some control during the wartime. Okay. So this new unicorn mast was signed between which two countries? India and Japan. So the name of the country you have to remember. Name of the technology, unicorn mast. Purpose is to make the ship in the stealth mode. Right. So it is the India's first military technology pact with Japan. This is a very, very important news. Clear? And from India side, the signatory was the Mr. C.B. George, and from Japan it was Ishikawa Takeshi. ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है. Alright. So what are the features of this unicorn mast? Integrated conical structure for stealth and efficiency. Used in Mogami class frigates of Japan. So Mogami class, like in India, we have this Talwar class, right? Similarly, these are the classes of ships. So in Japan, it is the ships which it was used was Mogami class frigates. Okay, and this is co-developed by Bharat Electronics Limited, Bangalore. Alright, so which PSU is involved? BEL, right? So you can mention the unicorn mast, India, Japan, stealth, okay, and you can mention co-developed by BEL. तो ऐसे आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो. चलो, नेक्स्ट इज इंडिया एंड IEA MOU फॉर कोऑपरेशन इन क्रिटिकल मिनरल्स. So what is the purpose of these critical minerals? So critical minerals are used for the economic as well as national security, right? So for what is included in this critical minerals? For example, uranium is there. For example, cobalt is there. These are known as critical, means very important for the nation. Okay. So India and IEA, International Energy Agency. IEA is International Energy Agency. Okay. So signatories are VL Kanta Rao and Faith Birol from IEA. Alright. And again this, because International Energy Agency is in itself, it is a big organization which is doing research. So it will help in capacity building and advanced data analysis, right? So this is important.
So which two agency have which two have organization have collaborated? So from India we have this Department of DEA, you can mention, right? DAE, Department of Atomic Energy, also with the International Energy Agency. Clear? So remember this thing, India and IEA has collaborated. ठीक है, तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको याद रखना है, राइट? चलो, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ वो रहता नहीं है, राइट? चलिए, नेक्स्ट इज इस टाइप के MOUs और आपके जो कोलैबोरेशंस हो रहे हैं ना, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. 2 से 3 क्वेश्चन इस पे आते ही आते हैं आपके. Whether in any kind of exam, 2 to 3 questions are coming like this. चलो, next is, as per the CEA report, India's renewable energy hits new milestone as installed capacity surpasses 200 gigawatt. All right. So now it is very important. So if I talk about as of November, so it is 203.18 gigawatt. It is surpassed. So this is Central Electricity Authority. They have given a report. So as of now, the total renewable energy capacity has reached 203.18 gigawatt. Okay, and it has an increase in 13.5% since 2023. Okay, and you know that during this conference of parties, during the Paris summit, India has given a target that by 2030 we are going to create 500 gigawatt of energy through non-fossil based resources. Okay, and out of this we have achieved 211.36 gigawatt. All right, so out of this 92 gigawatt is from solar energy, 47.72 is from wind power. All right, so the 27% around 27 28% of the total renewable energy, it is from solar energy. Okay, 7.7% from wind, right? And there are other sources also like biofuels. ठीक है, आपका फिर hydroelectric power हो गया. So these are the different area of the renewable energy. Clear? So remember this thing. Also, it will help in the employment, and it has seen that the renewable energy sector has generated 1 million jobs in 2023 as per the IRENA report. So this is showing that how renewable energy is not only targeting the climate change part but also focusing on also helping in the employment part. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. So just remember the value as of now. The total renewable energy capacity, it has reached 203.18 gigawatt. Okay, and our target is through non-fossil based fuel based energy, we have to develop 500 gigawatt by 2030. This is our INDC, intended nationally determined contribution, which we have adopted during the COP21 Paris Agreement. ठीक है, so ये आपको याद रखना है. Is it clear, guys? Yes, no in the comment section. आप लोग शॉर्ट नोट बनाते चलते हैं उसमें. आई डोंट वांट कि आप दोबारा ये PPT खोलो और फिर से इसको पढ़ो और फिर से नोट्स बनाओ ना. इट इज़ बेसिकली डुप्लीकेसी ऑफ वर्क. सो इसी के साथ साथ आप अपने नोट्स भी बनाते चलो. डू दैट थिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस टू सेव योर टाइम. ओके, चलिए. तो अबाउट सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 के तहत इट वॉज established, right? And it was further amended through this Electricity Act of 2003, right? और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर. And the present chairperson is Ghanshyam Prasad. Headquarters is in New Delhi. See, these are some static facts about Central Electricity Agency. Okay, चलो. Next is white category industries exempted from state pollution control board approval requirements. ठीक है,
So first of all, let's understand what are white categories industries. So basically, these are low pollution potential. Those industries which are creating very less pollution, that comes under white category of industries. Okay, so these are primarily involved in dry, mechanical, and non-polluting operations. So very good examples are manufacturing of air coolers or assembly of electric lamps, fly ash bricks. Then repairing industry like electric motors and generator, food processing, textile and papers, sustainable energy, right? So these are the areas, these are the examples of white category industry. That's why by name it is clear na, white means less pollution causing. Okay? So they have been exempted from this state pollution control board approval. Okay? So in this pollution index criteria, those industries which score less than or equal to 20, those are exempted under this Prevention and Control of Pollution Act provision. Okay? So why they're exempted? Because let's say if you want to start a white category industry, any kind of manufacturing unit now, whenever you are going to establish, you have to take a pollution certificate from their state pollution control board. Before that, you cannot start your manufacturing unit. So now let's say if you are starting a white category based industry, you don't have to take that certification. ठीक है? So एक थोड़ा bureaucratic hurdle आपका कम हो गया. Okay. Then this consent to establish or consent to operate merge with environmental clearance from Ministry of Environment and Forest. Okay, so अलग अलग आपको consent लेने पड़ते हैं, consent to establish and consent to operate. Now they have merged. Okay, so this has made the process a little bit of streamlined. ठीक है, so it includes 39 sectors. So there are 39 sectors which comes under this white category. ठीक है, so ये आपको याद रखना है. Less than or equal to 20 is the number pollution index and white categories. In white categories we have 39 sectors. तो ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा. चलो, is it clear guys? White categories of industries. So the most dangerous is the red category. Okay, in which the coal related, the let's say dust related, construction related. Okay, so in red category we have thermal power, we have construction industries. Okay, fertilizers, these comes under red category. Then we have orange, this is moderate category. Okay, in this we have what? Textile, dairy, like this, plastic manufacturing. Then we have green. ठीक है, ये आपका मिनिमल होता है. एंड देन आफ्टर कम्स वाइट विच इज़ द बेयर मिनिमम. दिस पॉल्यूशन होता है. जैसे आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, सोलर पावर प्लांट्स हो गया, आईटी एंड सॉफ्टवेयर पार्क हो गया, जिसमें भी बिकॉज दीज आर मोस्टली सर्विस बेस्ड आईटी एंड पावर सेक्टर. ओके, साइंटिफिक एंड रिसर्च बेस्ड इंडस्ट्री, दीज आर नोन एज द वाइट कैटेगरीज. ठीक है, यहाँ क्लियर सभी को? चलो, next is defense related news. So DRDO has successfully completed flight test of guided Pinaka weapon system. DRDO भी डेली कुछ ना कुछ करते रहता है कंट्री की सेफ्टी के लिए. राइट, ठीक है. सो बेसिकली जो पिनाका है, फर्स्ट अंडरस्टैंड. ओके, so just understand this Pinaka it is the indigenous multiple rocket launcher system. So अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, यहाँ पे स्मोक की वजह से नहीं दिख रहा है,
बट इट इज़ लाइक समथिंग लाइक दिस। ये ऐसा रहता है, यहाँ पे ऐसे मल्टीपल रॉकेट्स ऐसे आप रिलीज कर सकते हो लाइक दिस। ये आपके रॉकेट्स हैं, है ना, तो ऐसे हम यहाँ से लॉन्च कर सकते हो मल्टीपल रॉकेट सिस्टम, इसको पिनाका बोलते हैं, ठीक है। और ये डीआरडीओ पे बनाया गया, डीआरडीओ ने बनाया है। और इसका नाम पिनाका क्यों रखा गया है? बिकॉज शिव भगवान का एक धनुष था, राइट। सो लॉर्ड शिवा ही हैज़ अ बो, द नेम ऑफ दैट बो इज पिनाका, ठीक है। सो हमारे यहाँ जो भी चीज़ें वेपनरीज या डिफेंस रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उसका कहीं ना कहीं रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है ना। जो हमारी माइथोलॉजीज़ हैं, some consider it as mythologies, but I consider that those were the real stories, those have happened, Ramayana and the Mahabharata, because we have seen evidence for that, ठीक है। सो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, पिनाका, राइट, because we have taken this entire technology from Russia only, but अब हम इन हाउस भी बना लेते हैं, चलिए। सो दिस इज मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए, इसकी टेस्ट फ्लाइट इन्होंने की है, सो विच वॉज वेरी सक्सेसफुल, राइट। So this guided Pinaka, they have replaced the Russian Grand BM-21. So this was the launcher which we have inducted. So this guided Pinaka, it has replaced this Russian Grand BM-21. Now it can fire 12 rockets in 44 seconds and with a range of 75 kilometers. So this is a sir, will you take some class on IBPS means marathon? Rohan, yeah, yes, I would be taking some classes. Okay, I will inform this in a day or two. Okay, what's the schedule? I will inform it. Otherwise, what you can do is now I have created two marathon classes. Two marathon classes, one for the ECGC, NIACL, and IBPS PO combined. So you should watch those two videos, right? तो अपना टाइम हमें वेट नहीं करना है, जस्ट स्टार्ट वॉचिंग दैट टू वीडियोस, दैट वुड बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल, एंड आई हैव शेयर्ड द PDF इन दिस टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, सो यू कैन क्विकली टेक इट एंड रीड इट ऑल्सो। बट आई वुड रादर से एक बार वीडियो देख लेना, उसके बाद रिवाइज कर लेना, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। So have you cleared the prelims, Rohan Chopra? So now this guided Pinaka, great, excellent, congratulations, ठीक है। अब मेंस पे लग जाना है फुल एनर्जी के साथ। अच्छा, आज मैं एक वीडियो देने वाला हूँ, वो एक बार आप टाइम टेबल ज़रूर देख लेना, है ना, वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और ट्राई टू फॉलो इट। चलो, developed by DRDO's ARDE with L&T and Tata Power. So DRDO, L&T and Tata Power, all these three organizations were involved in this Pinaka guided weapon system, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है, क्लियर। so, इस चीज़ को याद रखना, then it is a multi-barrel rocket launcher. Next is Ministry of Finance PSB registers 11% year-on-year growth in first half of financial year 25 at 236 trillion rupees. So this public sector banks, so you can see the growth rate is quite astonishing, 11%. That is a good number. Okay, Samar, I will try to take this marathon session. Okay, और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आज आपको कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। चलो, so what are the public sector banks? So we have SBI, Bank of Baroda, Bank of India, Punjab National, UCO Bank, right? So these are the public sector banks which have registered 11% year-on-year growth for the first half of financial year 25. Okay, अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए तो नहीं है, बट दीज आर मोस्टली डेटाज, ठीक है। सो आप एक दो डेटा याद कर सकते हो, दैट द टोटल
cumulative business valuation is 236 trillion rupees and the growth rate is 11%, है ना. ये सब आपको डेटा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. What you can remember is some terms like capital adequacy ratio, which is basically a indicator of bank's financial health. So it is at 15.43%. Alright. और जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है जैसे आरबीआई वगैरह बोलती है उनका 11.5% बोलती है, बट दे हैव मेंटेन्ड इट एट 15.43%. इट मीन्स दे हैव गुड मनी एज अ बैकिंग. ठीक है. And due to this kind of reforms, due to AI, blockchain, right? Ease reforms, ease are the very important banking reforms, right? Insolvency and bankruptcy code. So these are the certain reforms which have helped these banks to gain this much of profit. And India has total 12 public sector banks. ये आप कुछ याद कर सकते हो. 12 public sector banks. ठीक है. Capital adequacy ratio is this much. Clear? राइट. एंड द ग्रोथ रेट. ये कुछ फैक्ट्स आप याद कर सकते हो, अदरवाइज ये आपसे पूछेंगे भी नहीं, है ना. सो यू कैन कंसिडर इट इन 1 और 2 स्टार न्यूज़, बिकॉज IBPS अभी इतना डेटा बेस्ड फैक्चुअल क्वेश्चन दे आर नॉट आस्किंग. एटलीस्ट थोड़ा सा सेंस रखते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड पूछ लेते हैं. ठीक है. आंध्र प्रदेश साइंस MOU विथ RIL टू इन्वेस्ट 65,000 crore फॉर 500 CBG प्लांट्स. चलो देखते हैं क्या है इसमें पूरी न्यूज़. सो MOU किसका साइन हुआ है? आंध्र प्रदेश का विथ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. एंड पर्पस क्या है? 500 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स इनको बनाना है. ठीक है. सो हर प्लांट जो टोटल इन्वेस्टमेंट इट इज 65,000 crore. आई डोंट नो हाउ दे आर गेटिंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी. हर प्लांट का कॉस्ट है, ईच प्लांट इज कॉस्टिंग 130 crore rupees. 65,000 crore, दैट इज अ बिग मनी. ओके. So remember this thing. So, and it is, see, whenever there is some kind of manufacturing plant is there, it is going to create employment. So it is expected to create 2.5 lakh jobs, direct or indirect, right? So remember, and this is the part of Reliance national target of setting 2,000 compressed biogas plants. So the company has itself its national target, so you can remember how big this company has become. ठीक है. तो आपको क्या याद रखना है? फर्स्ट, ऑल्सो इट अलाइंस विद द नेट जीरो टारगेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाई 2070. बिकॉज सी, compressed biogas, it will help to form what? This biogas would be used for, it is a good source, it is a clean source of energy. ठीक है. So remember this thing. You can also use this as a renewable source of energy. तो रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया, नेट जीरो का टारगेट भी अचीव हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री को प्रॉफिट भी हो गया, है ना. चलो नेक्स्ट, एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज. साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू फायर रेजिलिएंट डुअल ब्लूमिंग स्पीशीज ऑफ डिक्लिप्टेरा इन नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया. सो इफ यू सी दिस इंडिया, these are the western ghats. So in the northern parts of the western ghats, they have found this dual blooming fire resilient species of flowers. Okay, so ये नाम आप याद रख सकते हो, Dicleptera fire resilient flower. Okay, and location is western ghats. ये तीन चीज आपको याद रखना है इस पूरे न्यूज में. ये आपको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है. ठीक है. एक चीज याद रखना, इसमें ना बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज भी मिली हैं, जैसे मेलेनोरा अगस्त्य मलाइका. अगस्त्य मलाई इज द प्लेस इन केरला. ओके, अगस्त्य मलाई इज अ प्लेस इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला. ठीक है. देन दिस श्रीनम आंद्रिकम, आंध्री इज नेम्ड आफ्टर दिस आंध्र प्रदेश. ठीक है. सो रिमेंबर दिस थिंग. देन गैस्ट्रोडिया लोहितेनेसिस, लोहित इज अ रिवर इन अरुणाचल प्रदेश. तो ये जो नेमिंग होती है ना, ये आपकी, अब जैसे ये देखो, ओकिनिविशियस टिकड़ी. सो यहाँ पे आपका पुणे की किसी हिल, टिकड़ी हिल के ऊपर इसका नाम रखा गया है. तो ये साइंटिफिक नेमिंग इट इज बेस्ड ऑन द टू थिंग्स, कहाँ पे पाया गया है और किस स्पीशी का है. तो उसके बेसिस पे ये नाम याद रख लगते हैं. तो आप तो बस डिक्लिप्टेरा का ये नाम याद रखना, है ना, वेस्टर्न घाट से मिला है. बाय आई बिलीव अगस्त्य मलाई आपको समझ में आ जाएगा. बाई नेम इट इज इन केरला. आंध्रिकम आंध्र प्रदेश, लोहित नेसिस लोहित रिवर इन अरुणाचल प्रदेश,
ओके, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। चल, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है इसमें, डोंट नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग। नाउ इंडिया हैव, देखो ये आपके वेस्टर्न घाट्स हैं और यहाँ पे आपके ईस्टर्न घाट्स हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की, मैंने वेस्टर्न घाट्स को एक कंटिन्यूस लाइन बनाई है, बट आई मेड ईस्टर्न घाट्स लाइक दिस ब्रेकेज, बिकॉज द फिजिकल जोग्राफी ऑफ दिस एरिया इज लाइक दिस ओनली। जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, इट इज़ अ कंटिन्यूस माउंटेन रेंज, बहुत बीच में बहुत छोटे छोटे कम गैप्स हैं, लाइक देर आर सर्टन गैप्स नोन एज पलाकट गैप, ठीक है। इस टाइप से आपके कुछ कुछ गैप्स हैं। बट जो ईस्टर्न घाट्स है ना, ईस्टर्न घाट्स में क्या डिफरेंस है वेस्टर्न घाट्स में? फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट कंटिन्यूस, ऑलराइट। और जब साउथ वेस्ट मानसून आता है ना, तो इसकी एक ब्रांच यहाँ पे जाती है और दूसरी ब्रांच यहाँ से, तो इन्हीं गैप्स के थ्रू इंडिया में ये एंटर करती है, राइट। दिस इज नोन एज द बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड दिस वन इज नोन एज द अरेबियन सी ब्रांच। चलो, ये सब की ज़रूरत अभी आपको तो नहीं है, दिस इज मोस्टली ज्योग्राफी रिलेटेड, सो दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स, मैं ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ा लेता हूँ, है ना। चलो, कभी और आपको सब बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। Those who are preparing for UPSC state PCS exam, they have to study this kind of geography thing. Chalo, let's do some practice questions. Very quickly start telling me which company is responsible for producing ammunition for the guided Pinaka weapon system. So tell me A, B, C, D. Economic Explosive Limited, Bharat Dynamic Limited, L&T, Tata Power. So ammunition वाला पार्ट मैंने एंड में लिखा था एक लाइन, उसको मैंने बोला नहीं था, आई बिलीव आपने उसको रीड किया होगा। करेक्ट आंसर इज ए, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड, इसने यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है। चलो, A is the correct answer for Economic Explosives Limited. Next is, which company has signed an MOU with Government of Andhra Pradesh to invest 65,000 crore for establishment of 500 compressed biogas plants? So A, B, C, D, Tata Group, Reliance, Adani, Bharat Petroleum. So the correct answer here is B, Reliance India Group. B is the correct answer. Right. Chalo. Next is, which of the following best describes wide category of industries? So what are those wide category of industries? Industry with high pollution, industry primarily involved in chemical process, industry with negligible pollution impact, industry with medium pollution potential. So the by name it is very clear. The correct answer here is A, B, C, D quickly. So C is the correct answer. नेग्लिजिबल पॉल्यूशन इम्पैक्ट जिनका होता है, ठीक है, जैसे एयर फिल्टर क्रिएशन, है ना, असेंबली, ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। गुड गुड। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एंड नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट्स? देखो, रिन्यूएबल एनर्जी में ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बायोफ्यूल, ओके, मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं, ठीक। So India's total renewable energy capacity has reached 203 gigawatt and showing a 13.5% increase from 23. Indian non-fossil fuel capacity has reached 211 gigawatt and country is targeting 500 gigawatt by 2030. ये तो हमने देखा कि पेरिस एग्रीमेंट में इन्होंने डिसाइड भी किया था, ठीक है। India's renewable energy sector is progressing toward 100 gigawatt target by 2025. So correct answer is, ये थोड़ा डीप क्वेश्चन था। Now एलिमिनेशन मेथड से आप इजीली कर सकते हो। अब देखो, इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर 1 and 2। थर्ड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है भाई? इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स 100 गीगावाट टारगेट बाई 2025। ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे अचीव कर ही लिया है ना, 203 गीगावाट, ठीक है। सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो थर्ड इज गॉन, दिस वन इज गॉन, दिस वन इज गॉन एंड डी ऑप्शन इज गॉन। सो बाई 1 and 2 ए इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा आप एलिमिनेशन से भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पहुँच चुका है भाई, तो 2025 तक 100 गीगावाट का क्या मतलब है ना, द राइट। चलो, which organization is involved in the MOU with India for cooperation in critical missiles? So in critical missiles, which has collaborated?
International Energy Agency. Okay, so we have seen this. Chalo. Next your homework question, what is the purpose of India Japan Technology Cooperation IJDTC MOU? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आफ्टर द वीडियो गेट्स ओवर. ठीक है, कोई डाउट किसी को? देखो ऐसे ही 30 to 40 मिनट्स अगर आप एवरी डे दोगे ना, 10 से 10 न्यूज़ के अराउंड हम कवर करते हैं, है ना. मैं अननेसेसरी बहुत सारी न्यूज़ लेके नहीं आता हूँ. आई डोंट हैव दिस टेंडेंसी टू ब्रिंग एवरी irrelevant news also, है ना, just for the sake of completion. I don't generally do that. I bring only the most refined current affairs जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी इसकी ज़्यादा है. ठीक है, अदरवाइज ऐसी बहुत छोटी छोटी न्यूज़ भी रहती हैं विच आई जनरली डोंट कवर बिकॉज आई डोंट फील लाइक दोज आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, चलो. सो एवरी डे 30 to 40 मिनट्स इज गोइंग टू ब्रिंग यू अ गुड डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन. ठीक है, चलो अब आज मिलते हैं उस वीडियो में जिसमें आपको टाइम टेबल शेयर करूँगा, उसको देखना, है ना. छोटा सा वीडियो है बट इट इज़ वेरी इफेक्टिव. ओके, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू 90 day चैलेंज दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर. ठीक है, उस वीडियो में तो नहीं बोलूँगा क्योंकि दैट वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर दोज जो IBPS PO मेंस देने वाले हैं, बट वहाँ पे मैं एक एंड में रेफरेंस ज़रूर दे दूँगा. आई विल गिव द रेफरेंस दैट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 25 आई विल गिविंग यू अ 90 days challenge. चलो, take care guys, I'll see you in the next video. Till then, have a great day and Jai Hind everyone.